गौरत्से नमः। श्री कृष्ण के रसस्थली से अंतर ध्यान होने पर ब्रजंगनाओं ने उनके गृह में व्याकुल होकर उसे जो विलाप करती हुई गीत गाया, उसे सुन करके श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने को और
अतिष्ठान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घते अन्तच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवजोषित वस्त्रजन्यसि संविदं विस्मयोदयम् प्रहसितां मनम् प्रेम विभूषण बृहद्वर्षियो दीक्षदामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते व्यक्तिसङ्गते विजिनहंस्तलं विश्वमङ्गलम् प्रजमनाकच नस्तिहात्मना स्वजन हृदुजां जंगिसूदन सुजातु चरणं बहुभं स्तनेषु पीतासनै प्रियदीमहि कलम् पटसि तद्व्यथते न किंसि उर्वादिभिः भ्रमति धीर्भवतादिकम् गोप्यः गायन्तः प्रलपतंश्च चित्रधारं राजन् कृष्ण दर्शन भूल सौधि स्मयमान मुखं कुजा पीताम्बरधर सग्वी साक्षात् मन्मथ गौ प्रेमानंदे हरि हरि। Hare Krishna. Just imagine the intensity in his voice. Or I became a devotee. Well, when I just got introduced to Gopi Gita, तो इनको ही सुन सुन के मैं पागल हो गया था। कितना इंटेंसिटी है इनके साउंड उसमें। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था तो उसे साउंड नहीं आ रहा था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, वी विल स्टार्ट नाउ। सो द 8th verse, मधुरया गिरा वल्गुआ कया बुध मनो कया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यते अधर सिंधुना व्यायस्वना। O lotus-eyed one, we are bewildered by your sweet voice, replete with enchanting words that capture even the mind of the scholars who are clever and expert in rasa. O hero, we gopis are your maidservants who carry out your every order. Please restore our lives with the divine ambrosia of your lips. With the word Madhuraya Gira, गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि whatever you utter is exceedingly beautiful, sweet. मधुरया गिरा, आप जो भी बोलते हो वो आपके मुख से जैसे कि कोई शहद गिर रहा हो. By speaking the word
Valguvakya. They're telling him, your words are enchanting. Vidhi vinas, vidhikari riva. Vidhi means order, and vidhikari means obedient maidservant. By these words, the gopis are saying, we will do everything you tell us to do. Muhyati. Muhyati का मतलब हुआ has the same root as the word moha, means illusion. So as soon as a person is an illusion, he cannot distinguish between good and bad. And at times he cannot even function properly. For example, Arjun became bewildered on the battlefield of Kurukshetra when his chariot was situated between the two armies. What should I do? He wondered. And what should I not do? Muhyati. Muhyati means implies transcendental bewilderment, which is in its 10th state. Dashama dasa. ठीक है? It's like death. Muhyate may also means senseless as in a faint. तो दशम दशा क्या होती है? पूर्व राग is fully matured when it occurs in those possessions of Samartha Rati. On this level of Purva Rag, the 10th Dasha, then he states, beginning from the intense longing up to the desire for the death can manifest. तो दसवीं दशा होती है डेथ की होती है. Let me just die. Since this Purva Rag is fully matured, the state of manifest is its are also fully matured. जैव में लिखा हुआ है. The 10 states that are intense longing, anxiety, sleeplessness, emaciation, inertia, impatience, illness, madness, delusion, and longing for death. Ujjwal Nilamani, Guru Rag, Division 9. So Srila Jiva Goswami explained that the gopis have drunk the nectar of Krishna's word, which are sweet, melodic, and brimming with literally ornament, alankar, and distinguish and execute imports. They tell Krishna our complete bewilderment is a serious malady, which only you can treat. You are the only doctor to cure us of our critical condition, and the ambrosia of your lotus lips is the only medicine. With these words, they imply that their bewilderment is so sweet that they want to experience it further. यानी कि दर्द ऐसा, ये दुख ऐसा, separation ऐसा, that they want to feel it more and more. In the previous verse, the gopis prayed to Krishna to place his lotus feet on their breast as an ointment. They wanted this ointment to treat the bewitched and feverish condition that has resulted from their tasting the nectar of Krishna's words. But यहाँ पर क्या हो रहा है? Then the mere remembrance of the treatment rapidly increased their disease. Now they pray, ointment which is applied externally will not do. We need to drink the remedy that will cure us. If you do not give us the nectar of your lips, we will surely die. They anticipate that Krishna would then ask, why will you die? And thus he begin their reply. We recall your gentle words, Madhuraya Gira, Valgu Vakya, with full of sweetness and various intentions. They say the speaker's tone of voice reveals his intended meaning. For example, the word, you're not a thief, carries quite a clear meaning, but some words spoken with a tone of sarcasm can actually mean you are certainly a thief. तो चोर भर गया, वो पागल है, तो चोर भर गया. अगर ऐसे बोला जाए तो sarcastic way, right? So you're certainly a thief. In this way, the spoken word may have several different meanings. बोलने का तरीका होता है ना, तू चोर नहीं है भाई. Trust me, you're not a thief. To make somebody understand, he's not a thief.
अरे तू चोर है, तू चोर नहीं है, पागल है, तू चोर थोड़ी ना है, इस तरीके से बोला जाए sarcastic way. So Srimad Bhagavatam and the other translated literatures were written in a particular tone with the intention of conveying a particular meaning. The meaning can be known only if the author himself explain it or reveal it to us. For example, when Krishna left Vrindavan to reside in Mathura, he sent Uddhava to Vrindavan with the message of gopis. The word message carried so many meanings that it was not possible for Uddhav to discern Krishna's intended meaning. He may have been able to understand it to certain extent, in a certain way, but there is a vast gulf of difference between his understanding and that of the gopis. Another example of this is the way in which Sri Chaitanya Mahaprabhu explained the 64 diverse meaning of the Srimad Bhagavatam. Atmaramasya munyo nirgata api arukame kuruvanti ahetukim bhaktim इत्थम भूत गुणोहरि. चैतन्य महाप्रभु ने 64 अलग अलग मीनिंग बताए थे इसके, और इस पर्टिकुलर श्लोक को आत्माराम का जो एक्सप्लेनेशन था महाप्रभु ने पहले ही एक्सप्लेनेशन दिया, फिर दूसरों काटा, फिर दूसरा दिया, फिर उसको काटा, ऐसे करते चले गए. तो ऑल डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आत्मा रामस, those who take the pleasure of atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization through freed from the kind of material bondage desire to render devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated soul. Chaitanya Mahaprabhu explained this verse to Sarvam Bhattacharya, who, although one of the best scholars in the world at that time, could only explain it in 9 different ways. Speaking in variety of moods and tones, Mahaprabhu enlightened him with the numerous other meaning of the verse. It is because of Krishna's expertise in speaking that the gopis now address him as the word Madhuraya Gira Varguvakya, which means that his sweet words are filled with various charming and profound meaning. Another instance of his sweet and enchanting speech occurred earlier that same evening when he had called the gopis by the melody of his flute. Upon hearing his alluring flute song, the gopis immediately abandoned all the household tasks and duties and ran into the forest, in whatever state they were in at that time. When they first arrived, Krishna ने क्या बोला? स्वागत वो महाभागा प्रियम किम करवानी वा व्रज श्यामयम कच्चित भूतागमन कारणम. Oh, most fortunate ladies, welcome. What may I do to please you? Is everything well in Braj? Please tell me the reason for your coming here. My God. The gopis, the word Mahabhaga means greatly fortunate. Why did Krishna use these words to describe the gopis? Let us consider what had taken place prior to this. Namely, Sri Krishna calling the gopis from their home by his flute song. And what was about to happen? Namely, Rasalila. After Krishna addressed them as greatly fortunate, he told them, do not delay. O chaste ladies, return to your husbands at once. The duty of a virtuous woman is to serve her husband under all circumstances, regardless of whatever his character is, good or bad. He may be rich or poor, beautiful and highly qualified, or lame and ugly, but still she must serve him. It is her religious duty to do so. Why did Krishna first welcome the gopis and then tell them to go?
What was the hidden intention behind these words? Our understanding of the word Mahabhaga, greatly fortunate, spoken by Krishna to gopis, depend on our level of realization. And it follows that our explanation will be in accordance with this. क्या है महाभाग का मतलब? नंदा किम अक्रोध ब्रह्मण श्रेया एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पापो यश्या stadam hari. Having heard of the great fortune of Mother Yashoda, Parikshit Maharaj inquired from Sukadeva Goswami. O Lord Mahabrahman, Mother Yashoda's breast milk was sucked by the Supreme Personality of Godhead. What past auspicious activities did she and Nanda Maharaj perform to achieve such a perfection in ecstatic love? Although Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Yashoda Devi regularly gave him her breast milk, which he would drink without satiation. Krishna is a helpless baby. Krishna is a helpless baby. Mother Yashoda considered him quite ignorant in this respect. Ignorant. If I do not support and nourish him, he may die. Because of this sentiment, Yashoda Maya has been called Mahabhaga. Why does Krishna address the gopis as Mahabhaga? The gopis are the crest jewel among all the residents of Braj. They satisfy him eternally in every way. So Mahabhaga वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति भगवान की सेवा अपने हित को ना रख के करे. तो सबसे भाग्यवान जीव कौन होता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. भाग्यवान के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है. किसी का बहुत पैसा है तो लोग बोलते हैं बड़ा भाग्यशाली है. किसी का बहुत पावर है, लोग कहते हैं बहुत भाग्यशाली है. लेकिन यहाँ पर भगवान गोपीश को महाभागा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज they satisfy him eternally in every way. No one else can serve him as they do, and he realizes this. As a professor examining his students, Sri Krishna was examining the gopis. However, when this professor heard the response of the students, he became astonished. He realized that they were much more elevated than he was, and he could never reach their level. भगवान गोपियों के साथ काम बराबरी कर सकते हैं. जो भी सीखा उन्होंने राधा रानी से सीखा. His intention was to test their love, but instead he became dumbfounded and bewildered. The gopis had left their homes and all material considerations for his sake. No one else could do such a thing. He was astounded by this, and therefore he called them Mahabhaga. Swagatam, Suswagatam means your arrival is auspicious. So it is generally translated as welcome. In this instance, however, it doesn't mean welcome. Okay, Krishna was questioning the gopis. Is your arrival here due to some auspicious or inauspicious occurrence? Have you come here because of a terrible incident in your house? Or maybe there has been an accident? Has there been a disastrous storm, flood of fire? Oh, कहीं ऐसा तो नहीं कि बकासुर आ गया हो? हाँ? आ गया हो? Has Bakasur, Agasur, or any other demon attacked your father, mother, or other relatives? Is this why you have come here, weeping and upset? The word Swagatam indirectly refers to Krishna's longing. He and the gopis both long to perform amorous pastime, vilas, with each other, and both desire the others to be first to speak about it. This was the reason for his ambiguity here, as is the case with worldly lovers.
He wanted the gopis to be the first to say, "This is what we want." He was waiting for their heart to be expressed with their words. But the gopis had the same wish. They felt Krishna called us here, so he should be the first to speak frankly. Both sides watched and waited, but the nature of prema is so deep that it cannot be stated openly. If the prema is expressed openly by saying, "I love you, I cannot live without you," it is extinguished, for it burns in the heart of both the hero and the heroine like a lamp. If that lamp remains within the home of the heart, it burns without flickering and emits an excellent light. On the other hand, if it is kept in an open doorway, a breeze is likely to extinguish it. जैसे कि ज्यादा ही अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है कि ओ आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, मोस्टली केसेस के अंदर उनके ब्रेकअप जल्दी होते हैं. और पीपल हु जस्ट कीप देयर रिलेशनशिप वेरी साइलेंट, दे कैन गो लॉन्गर. लाइक देयर इज अ जोक, नो, एक ओल्ड लेडी बोलती है, "यू नेवर से दैट यू लव मी." कहता है, शादी के टाइम पे देखो बोला था ना कि आई लव यू, आज से 40 साल पहले. कुछ चेंज होगा तो बता दूंगा ना तेरे को मैं. नथिंग हैज चेंज. इट्स अ वेरी गुड जोक. तो तभी कहा जाता है, चाहे भजन हो या किसी के प्रति प्रेम हो, प्रेम भाव हो, वो सब हमें हमेशा बढ़िया तरीके से छुपा के ही रखना चाहिए. अगर हम प्रेम को ओपन करेंगे सबके सामने, तो जो प्रेम की इंटेंसिटी होती है वो खत्म हो जाती है. प्रेम की जो वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है. जैसे कई लोग मुंह पे तारीफ करते हैं, यार तू मेरे लिए ये हो, मेरे लिए वो. मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मुंह पे तारीफ करते हैं, "प्रभु आप तो हमारे लिए ये हो, प्रभु आप तो हमारे लिए वो हो." लेकिन पीछे वो कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन एक व्यक्ति जो नहीं बोल रहा मुंह पे कि आप ये हो, आप वो हो, लेकिन उसके अगर हृदय में ग्रेटिट्यूड है, तो दैट पर्सन विल नेवर ट्राई टू हार्म यू. आई कम अक्रॉस दिस पीपल often. So I know. So this is also true for a devotee. Even one in the stage of practice in Prema Bhakti Chandrika, 9th song, verse 19. गौतम दास ठाकुर क्या कहते हैं? साधक को warn कर रहे हैं on all the level that one should not disclose one's bhajan. अपने और भजन कथा ना कहिबे यथा तथा. अपने भजन की कभी भी गुह्यमता किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए. भक्ति इज लाइक अ कैम्फर, गुरु हमेशा बोलते हैं, in the sense that it is evaporates if left in an open place. If a devotee openly tells others, "I am chanting so many rounds, I love Krishna, I have so much bhakti," his bhakti will at once disappear. If anyone asks a truly advanced sadhaka about his relation, he will say, "Oh, I do not have even a trace of prema." कभी कभी a sadhak shares his realization with other people just to encourage them, just to motivate them. Like, you know, कि कोई पूछे आपसे, "अरे जीवन का गोल क्या है?" लेकिन विनीत प्रभु और मेरी बात हो रही थी, तो विनीत प्रभु कल बता रहे थे कि अरे आई नो भक्ति. बोला, अच्छा, व्हाट इज भक्ति फॉर यू? तो हिज अंडरस्टैंडिंग इज ओके. ही सेड, अरे यार बस सुबह उठना जल्दी, हमें माला करनी है, हरि नाम करना है, जप करना है, सभी लोगों का सम्मान करना है, सभी वैष्णवों का सम्मान करना है, ठीक है, किसी के प्रति अपराध नहीं करना, वैष्णव सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, नाम जप करना है ना, शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र पढ़ाने हैं. दैट्स इट. तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको एक्सप्लेन किया प्रभु को कि एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण क्या है. कि वो सुबह जल्दी उठता है, अपना होमवर्क टाइम पे करता है, अपने आप तैयार होता है, ठीक है, स्कूल में डिसिप्लिन में रहता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, टीचर सारे सबको टीचर को खुश रखता है, टीचर जो भी टास्क देते हैं उसको पूरा करता है, एंड सो ऑन. तो ऑल दीज थिंग्स जो भी आप बता रहे हो, ये भक्ति नहीं है. भक्ति जो होती है वो ये एक अच्छे भक्त के लक्षण है.
कि वो सबका सम्मान करता है, हरिनाम जप करता है, वैष्णव सेवा करता है, वैष्णव का सम्मान करता है, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्त ते करिया किया, गुरु के वाणी को अपने चित्त से एक मानता है। और हम तो बोलते हैं ना, सकले सम्मान कोरिते शक्ति, सबको सम्मान करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक भक्त होता है, वो अपने गुरु से मांगता है, गुरुदेव मुझे ताकत दो ताकि मैं सबको सम्मान कर सकूं। तो लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी होने से आप जीवन के गोल को अचीव कर सकते हो, बट अच्छा विद्यार्थी होना जीवन का गोल नहीं है। जीवन का गोल क्या है? कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो, है ना, मेटीरियली देखा जाए तो, या फिर जिंदगी में वो करना जो तुम करना चाहते हो, है ना, उसके लिए पढ़ना, उसके लिए सिंसियर होना। उसी तरीके से एक भक्त के जीवन में ये सब चीजें होती हैं, सबका सम्मान करता है, जब करता है, सब कुछ करता है, लेकिन लाइफ का प्रयोजन केवल एक ही है, अपनी स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना, उन्हें स्वरूप को प्राप्त करना। पहले अपने स्वरूप की रियलाइजेशन होनी चाहिए, और फिर उसी स्वरूप की ओर सिद्ध होना चाहिए। और इसी से, इससे जो कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त होता है। ये बहुत ही गुह्यम बात है। जैसे राधा दर्शन की अगर बात करें, तो राधा दर्शन ये गोल ऑफ लाइफ है। गोल ऑफ लाइफ तो है, लेकिन उसके लिए हम क्या है, कौन सी मंजरी है, क्या हमारी सेवा है, कैसे की जाती है सेवा, क्या हमारा भाव होना चाहिए, तो ये सब कैसे रियलाइज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य बाबू सेट द एग्जांपल ऑफ दिस बाय अटरिंग। तो क्या है कि हाँ, तो उसी में साधक साधक जो होता है, वो कभी भी अपने भजन की सक्सेस को कभी किसी से शेयर नहीं करता। वो बताएगा नहीं कि उसने क्या अचीव किया है लाइफ में, कभी कभी बता देगा। क्यों बताएगा? ताकि दूसरे को मोटिवेशन मिले। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम्म, एक मिनट। ये जो हम इमेज देख रहे हैं ना, ये सेवा कुंज की जो इमेज है, इसको माता जी बनाती जा रही थी, बनाती जा रही थी, बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी वॉज all the time she made the whole picture, Shamarani Didi. But she was asked, she said कि what is the reason why it's incomplete? जब भी गुरुदेव आगे कहते दिस इज नॉट कंप्लीट, ये एक निवृत्त निकुंज की लीला है जो हम देख रहे हैं। तो व्हाट इज रीजन? तो उन्होंने बोला कि शायद हो सकता है शुक और सारी, कैन यू सोच, देख सकते हो, वो मिसिंग तो नहीं थे, या हंस तो मिसिंग नहीं था, तांबुल तो मिसिंग नहीं था, नहीं, तो देख रहे हो, हिडन गोपी, ये मिसिंग थी। It took her 6 months to understand कि गुरुदेव का भाव क्या है, कि निवृत्त निकुंज के अंदर जो सखियां हैं, गोपियां हैं, वो हर समय राधे श्याम के साथ उनकी सेवा में है। और ये जो गोपी यहाँ पे देख रही है ना, जो दिख रही है हिडन गोपी, दिस वॉज द सीक्रेट। एंड द मोमेंट शी हैड मेड इट, गुरुदेव केम एंड सॉ एंड ही सेड यू गॉट इट। बट अब ये था, ये गुरु ने क्या किया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित किया। पहले खूब कथाएं सुनाई, खूब लीलाएं सुनाई, जो कथा सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, श्रवण करती गई, करती गई, करती गई। श्रवण से उनको रियलाइजेशन होनी शुरू हुई, और रियलाइजेशन होते 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 एक छोटी सी चीज, कोई सोच भी नहीं सकता कि ये उनके दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ।
और गुरुदेव ने उनको डायरेक्टली बताया कि हाउ डज इट वर्क, एंड देन शी हैड मेड इट, एंड देन शी अंडरस्टूड दिस इज द स्वरूप ऑफ गुरुदेव। बट ये भी बात उन्होंने रिवील नहीं करी अचानक से, बाद में उन्होंने ये वाली पेंटिंग बनाई। अब देख रहे हो इनमें ये सखियां जो है, एक दो तीन चार, तो इसमें गुरु मंजरी है और रूप मंजरी रति मंजरी है, साथ में और ललिता विशाखा है, ये ललिता है, ये विशाखा है। उसके बाद में एक श्री नारायण महाराज अपने मंजरी मंजरी स्वरूप में है, और एक जो है शिला भक्ति प्रज्ञान प्रज्ञान केशव महाराज परम गुरुदेव अपने मंजरी स्वरूप में है। प्रभु जी, उसको उन्होंने जब ये फोटो पूरी की पूरी पेंटिंग बनाई, तो उन्होंने पेंटिंग पेंटिंग तो सब देख ली गुरुदेव ने, लेकिन उन्होंने बोला ओके इट इज ओके, बट मैंने कब बताया कि मेरे मंजिल स्वरूप की जो चुन्नी है वो इस कलर की है, वो उस कलर की भी तो हो सकती है। एंड देन इमीडिएटली शी अंडरस्टूड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल स्वरूप ऑफ गुरुदेव। इनडायरेक्टली उन्होंने बताया। ये कहानी मुझे ना ब्रेक्स में पता है, तो मैं हरि ढंग से बोल। बता नहीं पा रहा, हरे कृष्ण बट प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, वो आप जूम करके दिखा सकते हैं जो पेंटिंग अभी आप दिखा रहे थे? ये वाली हाँ, जिसमें आप गुरुदेव का वर्णन कर रहे थे ना, उनका मंजरी स्वरूप। मैं कैसे बताऊं? ये वाली कह रहे हो आप, अगर आप देखोगे तो? नहीं, वो नहीं, वो प्रभु जी, परम। जिसमें चार सखियां साथ में है ना, लेफ्ट राइट में ललिता विशाखा देवी और कनक मंजरी। हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये वाले 3rd नंबर। हम्म। ये माता जी देख रहे हो? जूम कर दीजिए, और परम गुरु महाराज वाला भी। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। ये माता जी ऐसे, इससे ज्यादा हो नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। देख रहे हो? हाँ ये ललिता, हाँ ये हाँ विशाखा, हाँ। उधर ये गोपी। ठीक है, देख रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। Anyways, ये पीछे देख लिया हिरन गोपी। हिरन गोपी देखी माता जी आपने? मदर कलावती। हाँ देखी प्रभु जी। और ये यदुरानी जी का पेंटिंग है ना, मैंने उसमें देखा हुआ है, किसी मंदिर में देखा हुआ है मैंने ये। हर जगह है माता जी, हाँ, एवरीवेयर इट इज। नहीं नहीं, ओरिजिनल पेंटिंग की बात करी मैं, पोस्टर की बात नहीं कर रही, पेंटिंग की। हाँ हाँ हाँ। बांके बिहारी टेम्पल के पास में कोई टेम्पल है वहां पे? हम्म। हाँ, रूप सनातन गौड़िया भट्ट, वहीं पर होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अपनी भजन की जो भजन है ना, कथा, हमें यहाँ वहाँ नहीं बोलनी चाहिए। तो क्या बोला? ना प्रेम गंदो अस्ति दारोपी द्रापी में हरो। My dear friend, I've not the slightest tinge of love for of Godhead within my heart. A true devotee will say, looking in my own heart, I find not a scent of bhakti, not even a scent of sadhan bhakti, not a single holy name. I chant is actually the pure name, Shuddha. In Sri Chaitanya Charitamrita, it is said that if a devotee is chanting the holy name, but not tears coming to his eyes and his heart is not melting, this is due to offenses. कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलि अपराधेर नाहय विकार। ठीक है,
There are offenses to be considered while chanting the Hare Krishna Mahamantra. Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ecstatic. ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. So we may contemplate this verse and consider whether or not we are chanting Shuddha Naam. When Naam is pure, it is one in quality with Nami, the possessor of the name. Chaitanya Prabhu said, my Guru told me you are ignorant and therefore you are not qualified to read Vedanta. You should just chant Harinam. I will not speak about topic of my internal service here. There without discrimination. Be extremely careful in this regard. Don't become angry. Don't find fault with others. Offer obeisances to the devotees' feet. ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया. ये नंबर 2 कहाँ पे था? अच्छा 19 वर्स. प्रेम भक्ति चंद्रिका का 19 वर्स है वो यही है. Anyways, my Gurudev told me you are ignorant. Hare Naam eva kevalam kalo naste gatir anyatha. So in this sense of Kali, there is no other means for self-realization than chanting the holy name. Chanting the holy name of Lord Hari. Then he gave me a mantra, the Gopal mantra. Bhagavad continued, and he told me, accept this mantra as non-different from Krishna. It is Krishna himself. I have no doubt about this. I began to do as my Gurudev told me. And soon a beautiful young cowherd boy came within my vision. I ran to catch hold of him, but he did himself. I ran towards him again, and I was just about to catch him when all of a sudden he vanished. I fell down and wept bitterly, and when he appeared to me again, I began to laugh. Whenever I chant this mantra, various incidents like this take place, and many transformations appear in my body and heart. This is the standard of chanting real Hari Naam. A true sadhaka think in this way. Although I have been chanting so many years, no spiritual symptom appear within my heart. I tell myself and others that I am a Vaishnava, but actually I am not. I do everything for my own interest so that others will praise me. Although I have many bad qualities, I do not want anyone to talk about them, and I have become furious if anyone points them out and discuss them. When I consider all these facts, I can understand what kind of devotee I am. This is the mood taught to us by Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktivinoda Thakur, whose humility is revealed in their writing. They were perfect in self-realization, and yet they judged the love of their bhakti in this way. चलो बंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आज वो आप लोगों को गोपी गीत सुनाना था, तो हम लोग उसको विराम देते हैं आज, और फिर कल इस पर डिस्कशन करेंगे फर्दर. एनी क्वेश्चन, डाउट, कमेंट्री? विनीत प्रभु, कैलाश वासी प्रभु. नो ब्रो जी, नो. लास्ट वाला जो पॉइंट बताया ना वो काफी इंपॉर्टेंट था. वो अपने भजन का था, किसी को नहीं बताना है डायरेक्टली. गुरु से कंफर्म कर सकते हो, गुरु से डिस्कस कर सकते हो. कभी कभी साधक को आप उत्साहन देने के लिए कुछ बोल सकते हो. देखो ना, हम लोगों को मोटिवेशन क्यों है? तो हमें पता है कि जो रूप गोस्वामी थे वो रूप मंजरी थे, राइट? यस. हमें पता है कि जो वो थे ना, कौन, गोपाल गोस्वामी, उन्होंने राधा रमन को अपील किया, राइट? हमें पता है, इसलिए हमारी निष्ठा हमारे गुरु में है, राइट? यस ब्रो जी.
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अंडरस्टैंडेबल भी है कि कभी कभी गुरुवर हमें आपको कुछ बातें इसलिए बताते हैं ताकि हमारे अंदर से सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, कलावती माता जी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं प्रभु जी, बस एंड थोड़ा सा वही मधुमंगल? जो बोल रहे थे कि अपना जो साधना है वो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में वही कि अगर हम किसी से शेयर करते हैं तो कुछ लोग मोटिवेट भी होते हैं। हाँ, बोलना मतलब बोलना नहीं चाहिए ना। कहने का ये है कि देखो, देयर टू वेज। फॉर एग्जांपल, सिंपल बता रहा हूँ, माता जी, हाउ मेनी आवर्स यू चैंट? वेल, I chant more than 16 every day. अच्छा, you chant more than 16 every day. So how do you get time, माता जी? अब यहाँ पर आप बोलो, I get up in the morning and without doing anything or before doing anything, I complete my rounds and then I start my day. अब आपने ये बात बोल तो दी, अब यहाँ पे ना तो आपने अपने अपने आप को प्रेज किया, ना आपने अपने भजन का सीक्रेट बताया, आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया, यो, दिस इज द वे आई कैन ऑल्सो चैंट, राइट? So this particular statement of yours become a motivation for so many people. समझ रहे हो माता जी? तो ये मोटिवेशन हो गया। अरे रघुराजू, हाउ मेनी राउंड्स हैव यू चैंटेड? माता जी, अभी 4 राउंड बचे हैं। रात के 9 बज रहे हैं और 4 राउंड बचे हैं। क्या बंदा है यार, बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ, मुझे भी पता है, मैं सुबह सुबह 6 बजे तक सारी माला खत्म कर लेती हूँ। ये सेल्फ प्रेज हो गया। ये सब नियोफाइट है। विनीत वधा को देखो, 4 माला से ऊपर ही माला करता पिछले 15 साल से, 16 साल से। लेकिन जो बंदा ब्रॉड माइंडेड होगा, वो देखेगा कि विनीत वधवा पिछले 16 साल से विदाउट एनी वैष्णव एसोसिएशन, विदाउट एनी मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ही इज चैंटिंग 4 राउंड्स एवरी डे। देयर आर सो मेनी डिवोटीज हु डजंट इवन चैंट 1 राउंड। राइट माता जी? जी जी जी। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। मधुमंगल, यू वांट टू से समथिंग? ओके, जी प्रभु जी, श्री राधे। कुछ बोलना है? नहीं नहीं। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च